Class 12, Subject Education, Chapter 2. So let's start with our next topic, which is main characteristics of Buddhist education. Number 1, Pravajya ceremony. What is Pravajya ceremony? The word Pravajya means going out. It means the child leaves his parents to enter into Sangh. Thus, the ceremony was held in those houses which offered their children to adopt Buddhism as religious monks or nuns in their future life. They exclusively dedicated themselves for the religion and its expansion in the society. The age of the child used to be 8 years for that purpose. See, in short, we can say that Pravajya is the act of leaving the world and adopting an ascetic lifestyle. Ascetic means saint or devotee. So, in this, when a person or a child or a student leaves his or her house for what? For adopting an ascetic lifestyle. So, this is called Pravajya ceremony. Pravajya means going out, bahar jana. It means जब चाइल्ड अपने घर को छोड़ता है टू एंटर इनटू संघ, यू कैन कॉल इट संघ, विहार, मठ, मतलब जब वो अपने घर को छोड़ करके एक एस्केटिक लाइफस्टाइल को लेने के लिए जाता है. द एज फॉर दिस शुड बी 8 years. 8 years का एज होना चाहिए इस पर्पस के लिए. और इसमें वही बच्चे जा सकते हैं, वही स्टूडेंट्स जा सकते हैं या चिल्ड्रन जा सकते हैं जिनकी फैमिली उनको अलाउ करती है बुद्धिज्म को अडॉप्ट करने के लिए. और इस तरीके से वो क्या बन जाते हैं अपने फ्यूचर लाइफ में? मॉन्क्स और नन्स. मॉन्क्स का मतलब होता है भिक्षु एंड नन्स का मतलब होता है भिक्षुनी. Okay. Vinay Pitak discussed the ceremony as the child would clean and cut his hair, wear yellow clothes, bow down his head in the feet of monks of the monasteries, then sit silently to take the following pledge. See, विनय पिटक में इसका हमें डिटेल मिला है प्रवज्य सेरेमनी का, जिसमें ये बताया गया कि द चाइल्ड वुड क्लीन एंड कट हिज हेयर, पूरे अपने उनको बाल बनवाने होते थे और येलो क्लोथ्स पहनने होते थे और अपने सर को झुकाना होता था किनके आगे? मॉन्क्स के आगे, उस मोनेस्ट्रीज के जो भी मॉन्क्स होते थे उनके आगे. और उनको कई सारे प्लेज को फॉलो करना पड़ता था. Go to the of Buddha, go to the of Dham, go to the Sangh. Then the child takes the following oaths: do not steal, do not kill, do not tell a lie, do not misbehave with others, do not take food at restricted places, do not be an addict of narcotics, do not use cosmetic, do not accept anything without charity, never take in the charity, costly jewels and things, do not attempt to entertain with dance, music, and magic life. See, in Buddhist religion, education, they are not allowed to do things like this. They have to live a very simple life. They are not allowed to do dance, singing, entertainment, or they have to live a very normal, very common life, ascetic life actually. सो इनको ये ओथ लेना पड़ता था कि इन्हें ये सारी चीजें नहीं करनी, लाइक डू नॉट स्टील, चोरी नहीं करनी है, किसी को मारना नहीं है, झूठ नहीं बोलना है, मिसबिहेव नहीं करना है, और रेस्ट्रिक्टेड प्लेसेस के फूड को ये नहीं ले सकते हैं. ठीक है. ओके. नंबर 2, उपसंपदा सेरेमनी. What is Upsampada ceremony? See, when the novice, what is novice? Novice is a person new to or inexperienced in a field or situation. जब किसी फील्ड और सिचुएशन में जब कोई इंसान नया होता है, जहाँ पे उसको कोई नॉलेज नहीं होता है, where he is zero, तो हम उसे क्या कहते हैं? Novice. Had completed education for 22 years, he had to leave monasteries. Before it, the monk had to go through Upsampada ceremony to acquire the full and independent status of a monk. It was essential for Upsampada ceremony that at least 10 monks were present at the occasion. उपसंपदा ceremony, in short हम कह सकते हैं, literally means approaching or nearing the ascetic tradition. See, जब आपका novice, when the novice had completed education for 22 years, he had to leave monasteries. 22 years education लेने के बाद यहाँ पर
नोविस को क्या करना पड़ता था, मॉनेस्ट्रीज को छोड़ना पड़ता था. बिफोर इट द मॉन्क हैड टू गो थ्रू उपसंपदा सेरेमनी टू acquire the full and independent status of a monk. It was essential for उपसंपदा ceremony that at least 10 monks were present at the occasion. He had to give his introduction to invitees. Then they used to ask many difficult questions to evaluate the wisdom and worth of the student before transforming into monks. See, in this ceremony, a student have to answer all the questions asked by the monks. यहाँ पर student को बहुत सारे questions पूछे जाते थे उससे, और उसको उन सारे क्वेश्चन का क्या करना पड़ता था, आंसर करना पड़ता था. कम से कम वहाँ पे 10 मॉन्क्स होते थे जो उस स्टूडेंट से क्वेश्चन करते थे, और इस तरीके से एक प्रोसेस चलता था. और इस प्रोसेस को जब वो स्टूडेंट पास कर लेता था तो वो एक मॉन्क बन सकता था या बन जाता था, मतलब वो इस चीज को पास कर लेता था. Then they had to give their final judgment whether the novice could attain or not attain the status of independent monk. Thus, democratic standard would apply for evaluating student caliber and its proper evaluation in monasteries. See, यहाँ पर मॉन्क्स जो है अपने तरीके से क्वेश्चंस पूछते थे, उसके बाद वो एक डिसीजन लेते थे कि जो स्टूडेंट है वो एक इंडिपेंडेंट मॉन्क बन सकता है या नहीं बन सकता है. The student then, if passed out, had to follow the following 8 principles all through his life. If यहाँ पे अगर स्टूडेंट जो होता था, if he passed all the questions or the process, तो उसको क्या करना होता था, he had to follow 8 principles. अपने पूरे लाइफ में, through his life, उसको ये 8 principles को follow करना पड़ता था, which is always live under the trees, wear simple clothes, take sattvic food, beg only for food, take cow urine as medicine, do not steal or kill the animals, do not campaign for magical powers, do not establish sexual relationship with women folk. These are the 8 principles which the student have to follow. These are the compulsory, principles. Number 3, studentship. Studentship in Buddhistic education was open for everyone without any caste, creed, and cultural limitations. See, there is no discrimination, no distinction in this process. Everyone is free to take the education in Buddhistic education. No caste barrier, no creed, no cultural limitations. Although the Chandals were not included in the system of education, generally the student in these monasteries included king, son, daughter, and sons and daughters of common folk of society, even like fisherman, carpenter, and kshatriya, etc. जो आपके चांडाल्स होते थे सिर्फ वो नहीं अलाउ होते थे, उसके अलावा जितने भी लोग थे, एवरीवन इज अलाउड इन दिस. किसी तरीके का कोई बैरियर, कोई लिमिटेशंस आर नॉट इन दिस. Everyone is free to take the education, the initiative. Number 4, selection criteria for studentship. Okay. So what is the selection criteria for studentship? Buddhist pattern of education was democratic in nature. Democratic meaning होता है of or relating to or supporting democracy or its principle. Okay. So Buddhist pattern of education was democratic in nature and opened its door for every citizen of the state. It must be noted that the following persons were not allowed any admission. See, Buddhist pattern of education was democratic in nature. कैसा था? Democratic and opened its door for every citizen of the state. हर citizen के लिए ये क्या था? Open था. It must noted that कुछ यहाँ पे person होते थे जिनको ये admission नहीं देते थे. Number 1, eunuch, which means हिंजड़ा जिसे कहते हैं, और आप कह सकते हो castrate, नपुंसक लोग जो होते हैं आपके. Slave and indebted persons, children. Number 3, who is in the court services. 4, who is declared as dacoit. Number 5, who has not finished imprisonment and escaped. Number 6, deformed persons. See, number 1 मैंने बताया आपको, जिसे हम क्या कहते हैं, castrate. Number 2, जो भी आपके slaves होते थे, सर्वेंट्स होते थे, इस टाइप के लोग जो स्लेवरी करते थे, या इंडेटेड होते थे जो हु इज इन कोर्ट सर्विस में जो होते थे. डकैत लोगों को नहीं अलाउ था, या जो जेल से भाग जाते थे या छुप जाते थे. डिफॉर्म पर्सन्स जो होते थे,
मीन्स कहीं से जो फिजिकली वीक होते थे, डिसेबल होते थे. Number 6, one who has armed bodily organs, orthopedically handicapped जो होते थे, who has got punishment from the king से जो punished होते थे, who has not taken permission of his parents, जिनके parents उनको permission नहीं देते थे, who has not taken permission, हाँ, who has tuberculosis एक disease होती है, या लेप्रेसी ये भी एक डिजीज है, और एनी अदर क्रॉनिक डिजीज. तो इतनी सारी चीजों जो जिनको होती थी, या जो इस टाइप के लोग होते थे, उनको यहाँ पर एडमिशन अलाउ नहीं था. इनके अलावा everyone is free to take the education. Number 5, एज एट द commencement of education. commencement का मीनिंग होता है किसी चीज को स्टार्ट करना, बिगिनिंग. तो यहाँ पे एजुकेशन के लिए क्या commencement था? Dr. A.S. Altekar says that in Buddhistic system of education, like Brahminical system, education begins at the age of 8 years. 8 years में start होता था. This age group is determined for the children who formally initiate as monks in the future. Okay. So क्या commencement था education का? It is 8 years. कम से कम आपका एज क्या होना चाहिए? Begin at the age of 8 years. Number 6, period of study. See, Babajja has 10 years of continuous study, while Upsampada has 12. Mark these lines. Babajja has 10 years. Babajja जो होता था ceremony उसमें 10 years. फिर आप continue करते थे while Upsampada 12. So 12 and 10, 22. Thus the whole educational duration of the child was 22 years, and he used to attain the age of 30 years at this age. Means कि 10 years में ये पबज्जा सेरेमनी करते थे, और 12 years तक उपसंपदा. सो जो ये होल प्रोसेस का ड्यूरेशन हो गया, क्या हो गया? 22. एंड देन ही यूज्ड टू अटेन द एज ऑफ 30 years एट दिस एज. तो इनको यहाँ तक पहुंचने में, इसको अटेन करने में टोटल 30 years मतलब इस स्टेज पर हो जाते थे. ओके, so that's all for today. Else we'll discuss in my next video. I hope you can understand this easily. Thank you so much.